Hello everyone, welcome to another episode of The Building Blocks. I am Vivek. I'm Saurav. And today we have with us Avnish, who is head of design at Tata 1mg. Welcome Avnish. Hi, thank you so much for having me here. ये सो अवनीश, आज हम आपसे उस बारे में बात करेंगे जो एक ऐसा वर्ड है जो प्रोडक्ट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट आई फील के कहते हैं कि सारे लोगों को शायद उसका सही मतलब पता नहीं है, एंड दैट इज़ डिज़ाइन थिंकिंग. एंड सिंस यू हैव अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन हार्डवेयर डिज़ाइन देन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, तो वी वांटेड टू हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू कि एक्चुअली में डिज़ाइन थिंकिंग है क्या और किस तरीके से एक्चुअली लोगों को उसको देखना चाहिए. So, I think you rightly mentioned that this design thinking word has been used, or in fact abused. Yeah, that's how I was saying. I was like, used and abused. Yeah. But I think one thing I would not agree to that now people don't know the meaning of design thinking because people have different definitions of design thinking, I would say. Mm-hmm. So even if you just search on Google, there will be like 1,000 definitions of design thinking, right? Right. So a lot of people have said that design thinking is a process. Somebody said this is a framework. But I think the foremost or the most important part is it is actually a mindset. Okay. Like for example, another example, when people in many organizations people say agile thinking, right? But this is again a very abused word, right? Yeah. I just purposely brought that word agile thinking, word because people are mentally they're not agile. Similarly, I think design thinking, it is a mindset, it is an approach, or it is an ideology, I would say. Achha. So that is why if you see two words, this has two words, right? Design and thinking. So thinking is one part, and when it started, so a lot of people wanted to bring the approach of how a designer thinks, right? That's more of empathizing, observation, and that's why these words have been used in when they made the process of design thinking, right? So मतलब since you mentioned कि काफ़ी सारी definitions है इसकी, तो क्या इसकी history रही है, मतलब how it came up and where we have been? यार ये शुरू तो 1969 में हुआ था, way back. अच्छा. जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, right? Because if you want to build something for some people, you have to really understand who they are, right? So वहाँ से कहानी शुरू हुआ, right? Empathizing with people. And then IDEO came into picture. They really promoted design thinking as a process. वहाँ से बहुत पॉपुलराइज हो गया है. टिम ब्राउन wrote a book of innovation and design thinking, something like that. I'm forgetting the name of the book. So वहाँ से बहुत पॉपुलर हुआ, and they also created a framework like 5D framework or double diamond approach. So people have been using. Also, I think design thinking, when this process came, this was designed for people so that non-designers or every department, everyone in the organization should start thinking from this perspective. That's why these templates or this framework came into picture. Got it. Yeah. Got it. तो अभी किस स्टेज पे है, मतलब लाइक हाउ आर द करंट पीपल परसीविंग डिजाइन थिंकिंग? कुछ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं या फिर? यार अभी तो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है टेक्निकली. And like the most popular one is the double diamond approach. If you go on the floor, everybody will talk about a double diamond approach. How to divergent conversion. Can you sort of like give us an example of what the double diamond looks like? So if you see double diamond, if you just visualize the double diamond, right? Yeah. So the first part of the first diamond, the first half of the first diamond is like diverging. When you diverge, which means you are trying to observe or empathize with the user. Let's say you are building any product for your user, you have to really deep dive into their shoes and really understand what they like, what their aspirations are, what their needs are, what their pain points are. Not only from the user perspective, also from the business perspective, also from the technical perspective, whether that will be feasible or not. That's why you diverge. You go in every direction to understand what the core problem is, and then you converge again to figure out, or let's say define the core problem, that this is the problem we want to really hit or solve. So that's you first diverge and then you converge, and then again you ideate. It opens up. So you'll see n number of possibilities. You'll really iterate into figuring out what are the solutions possible to solve that particular problem, right? So then you again kind of diverge, and then again converge using some, let's say, logic, some metrics to understand, okay, this is the final solution which can really work out. So then you
So that's why double diamond, diverge, convert, diversion, convert. It can keep on going, and you can also kind of go to and fro. That's how it works. Yeah, I thought it was just 2 steps. इंटरेस्टिंग. बट यहाँ पे जहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि देखो डाइवर्जेंस तो काफ़ी ईजी है, लाइक एवरीवन कैन ब्रिंग आउट आइडियाज, एवरीवन कैन कि भाई ये कर देते हैं वो कर देते हैं, बट हाउ डज दैट कन्वर्जेंस हैपेंस कि भाई ये मेक्स सेंस, दिस डजंट मेक सेंस. सो यार इसमें बेसिकली किसने बहुत सही दिमाग लगाया है, राइट. व्हाट वी बिलीव इज दैट creativity is the right side of the brain. But technically जब आप एक डिजाइन करते हो तो you need both the brains, right? So first part, second part, so when you're converging, you have to use some logic, right? Some rationale behind it. So वो जो conversion है तो वहाँ पे आप analysis कर रहे हो, आपने जैसे आपने diverge किया, आपने सब कुछ समझ लिया, right? You met people, you observed them, you walked in their shoes, you spoke to your technical guy, you spoke to the business, this is what we can give, this is something which we cannot give. But how do you converge? Right. There has to be some logic, you have to arrive at some point. So there can be 1,000 user को तो सब कुछ चाहिए होता है, right? They're spoiled. Yeah. They'll and there's nothing wrong in saying that. So they would want everything, but can you give that? So you can't promise something which you can't give. Then you have to converge and figure out that this is something which is like the right spot. Desirability, feasibility and viability वाला जो spot है. That's when you converge. Got it. समझ गया. तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ विच यू मेंशन कि इट स्टार्टेड वे बैक इन 1969, बट उस समय इतना ज़्यादा डिजिटल डिज़ाइन का था नहीं. बट मेरा एजम्पशन ये है कि आजकल व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिज़ाइन थिंकिंग पीपल फर्स्ट थिंक ऑफ कि ऐप डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, इस तरह का कुछ है, वहाँ के ऊपर पीपल आर ट्राइंग टू डू समथिंग. बट उस समय पे देयर वर लाइक हार्डवेयर प्रोडक्ट्स पीपल यूजिंग. तो वो किस तरीके से एवोल्यूशन आया? मतलब इफ आई हैव टू थिंक ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग वेरी जनरल वे, लाइक इट कैन बी अप्लाइड टू एनीथिंग आउट देयर, राइट? तो उसका हाउ हैज द एवोल्यूशन कम अप एंड हाउ कैन यू शेयर सम एग्जांपल्स कि किस तरह डिज़ाइन थिंकिंग रियल लाइफ के अंदर अप्लाई होती है? डिजाइन थिंकिंग तो यार जैसे हमने पहले शुरू में हमने क्या स्टार्ट किया कि ये तो आइडियोलॉजी है, प्रोसेस है, थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग है बेसिकली, राइट? अब चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो या डिजिटल प्रोडक्ट हो या सिर्फ एक लाइफ की सिचुएशन हो, राइट? सो यू कैन यूज दैट प्रोसेस, योर आइडियोलॉजी एवरीवेयर. आई जस्ट गिव यू एग्जांपल ऑफ लेट्स से I had spent a good amount of time working with LG Electronics. It was completely physical products. Right. मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा, सब समझ पाओगे कि क्या कहानी हो रही है. रेफ्रिजरेटर है, उसका एक हैंडल होता है, राइट? करेक्ट. उसके पीछे आपने देखा होगा एक एलजी के रेफ्रिजरेटर में पीछे एक स्कूप है. हैंडल देयर इज अ स्कूप है, राइट? परफेक्ट. तो सम पीपल माइट से दिस इज अ गुड डिजाइन एलिमेंट, राइट? कुछ लोग बोलेंगे कुछ और है, बट ये कैसे आया, राइट? सो व्हेन वी मेट लॉट ऑफ पीपल, अब उसमें एक बिजनेस का प्रॉब्लम भी है, यूजर का प्रॉब्लम भी है और टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, राइट? मैं तीनों को ऐसे बीच में मैच कराता हूँ, राइट? सो बिजनेस का प्रॉब्लम ये है कि यार मेरे को लेट्स से इमेजिन करो कि यार अभी मेरे कंटेनर में, एक शिप कंटेनर में जो शिप करते हैं उसमें लेट्स से 1000 रेफ्रिजरेटर जाते हैं विद द कार्टन, राइट? मुझे ये कम नहीं होने चाहिए. आप नया डिजाइन लेके आओगे, ये कम नहीं होना चाहिए. बढ़ा दोगे तो बहुत अच्छी बात है, राइट? एक लेयर बढ़ जाती है अगर आप मैं कुछ कम कर देता हूँ. अच्छा, मेरे कंटेनर में. दैट्स वन. ना दूसरा आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी है, उसके बारे में बात करेंगे. पहले यूजर की बात कर लेते हैं. सो वी यूजुअली यूज्ड टू ट्रैवल पैन इंडिया. साउथ में चेन्नई इज वेरी इंपॉर्टेंट, इधर अपना नॉर्थ को तो है ही, ईस्ट में अपना उधर अहमदाबाद वगैरह एंड बॉम्बे. सो इफ यू गो टू प्लेसेस लाइक लेट्स से हरियाणा, इफ यू सी देयर फिंगर्स, I show your fingers. Your fingers are also thin, right? My fingers are also thin. आप दिखाओ जरा, आपके थोड़े से thick है, right? Right back. Now imagine a person from a place like Haryana where they have big build, right? Thick fingers, and they wear rings as well. Correct. Rings पहनने का बहुत हमारे यहाँ कल्चर है, right? तो रिंग उसमें एक छोटा सा पत्थर, तो आपकी फिंगर इतनी मोटी हो जाती है, right? Now imagine my door is flat. उससे मैं हैंडल जब बनाऊंगा, I have to have minimum of 30 mm gap so that मेरी finger goes really inside without scratching the door. Correct. अब अगर मैं उसको यूज करता हूँ, मैं हैंडल goes really out, which means eat up space from my वो पूरा डायमेंशन बढ़ जाएगा. सो स्कूप दे दो. नाउ अब जब स्कूप दे रहे हैं ताकि आपका हैंडल वापस से अंदर चला जाए, हाउ डू यू मेक इट डिजायरेबल? सुंदर भी तो बनाना है, राइट? देन दैट्स द विजुअल एस्पेक्ट ऑफ इट कि कैसे आप उसमें ट्रांजिशन ले आते हैं. अच्छा ना, बड़े बड़े
विजुअली अपीलिंग डिज़ाइन कैसे बना सकते हो. देन यू हैव ऑल लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कि आप वैनिशिंग लाइन चाहिए, स्कूप बना देते हैं, यू नो. एंड ऑल्सो व्हेन यू यूज मेटेलिक शीट्स तो उसका रिफ्लेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. सो यू कांट क्रिएट एनीथिंग जस्ट लाइक दैट बिकॉज दैट शीट विल रियली add a lot of role when you create any design around in the refrigerator, or let's say any product which is made out of steel. Got it. So now you see how these things meet together. So that's how design thinking works. So you mentioned the double diamond and other methodologies. Can you maybe like give us more methodologies that are being used here? I've heard fishbone diagrams and Ishikawa diagrams. So like can you sort of give us a little bit more information on और क्या तरीके हैं जिससे लोग design thinking Okay. and So, maybe someone can go and research and read up. Correct. I think जो मोटा जो थॉट है वो तो डिजाइन थिंकिंग है. उसके अंदर लोगों ने अपने बहुत सारे चेंजेस आए हैं. एंड ऑल्सो वो भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं आए हैं बिकॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक रिक्वायरमेंट अलग है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी ही बात करूँ राइट, और लेट्स से एनी प्रोडक्ट कंपनी जो आज की डेट पे ऑपरेट करती है, द बिगेस्ट चैलेंज फॉर देम इज द स्पीडी डिलीवरी. अगर आप लेट हो गए एंड देयर इज अनदर कंपटीशन, वो आपसे आगे निकल जाएगा. हाउ डू यू कोप अप विद दैट? सो वहाँ पे लोगों ने अपने प्रोसेसेस बनाए हैं. आई विल गिव अनदर एग्जांपल ऑफ जेक नैप डिजाइन स्प्रिंट्स. So what they did was that, of course, Google में तो सारा मीटिंग हो रहा है, right? And then of course you are wasting a lot of time to arrive at a final solution. So he created a 5-day design sprint process. उसमें 5 day में you can solve any complex problem in just 5 days. Tested and prototyped. The only crux there is that in those 5 days you have to really involve the decision-making stakeholders in the meeting. Got it. राइट. अब जैसे आपका जॉब्स टू बी डन प्रोसेस है. जॉब्स टू बी डन इज वेरी सिंपल. आप किसने बड़ा इंटरेस्टिंग यूज किया जॉब्स टू बी डन बिकॉज पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट, दे आर ट्राइंग टू डू सम जॉब, ट्राइंग टू सॉल्व समथिंग, राइट. तो वो जॉब उन्होंने वर्ड ले आया है कि भाई ये यूजर मेरा क्या जॉब करने वाला है जिसका मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ. सो दैट्स हाउ जॉब्स टू बी डन केम इनटू पिक्चर, राइट. सो दैट्स हाउ डिफरेंट प्रोसेसेस. एंड I think the smartness of any organization is to how do you play around the process. ऐसा नहीं है कि आप ऐसा blinker लगा के just follow the process because that's where the smartness lies of the team. हाँ, मतलब depending on situation the process will actually change. Different जैसे उसके छोटे और processes हैं for example, no, but these are smaller modules within the design thinking process या अलग-अलग जो frameworks बने हैं. But उसका बात करेंगे तो बहुत deep चला जाएंगे. Let's not जैसे what if scenarios हुआ, how might we's हुए. These are certain smaller tools. Empathy mapping हो गया, customer journey mapping हुआ, which is like again abused word again. I would say customer journey mapping. If you go to any organization, everybody will be talking about customer journey mapping कर लो. But are we really doing it? So I just think that Avnish is setting us up for a whole series of design thinking. Right? So Avnish will just have you come here again and again if you don't mind. But so now we were talking about the 5-day work model, right? How would you implement something like that at a fast-moving, mid-sized company, right? Because a lot of your stakeholders are not directly available at times, and you still have co-located teams that are working together. Correct. So how do you think a model like that could function? How would you design an organization that can sort of help us boost this 5-day process and get more productivity? I think what we can do is, or what I think we should be doing is that, of course, like I initially said that the decision makers should be there in the 5-day workshop. When I say should be there, I didn't mean that they should be there for the whole day. Yeah. Right. So let's say there's a core team. There are people who are capable enough to take that business decision. That's very, very important. And people who are subject experts should also be part of that meeting. And of course, if we can involve some end users, that is the best thing which we can do. So in fact, one of the projects which we are just starting, we are planning to do that. Every Friday we are trying to call some end consumers during our workshops so that we can co-create with them.
So if this 5-day workshop, we have these stakeholders which are not available all the time, but we can have some time and we can call subject experts to whatever, let's say we spend a day in, let's say, ideating or whatever, and then towards the end we call those subject experts and the key stakeholders, the decision makers. We sign off and then move on to the next day. That's very important. Otherwise what happens is that no, we are doing a lot of meetings, but then the entire team who's involved in that process sometimes are not enough to take that final call. Right. And then we do review meetings, right. which means you will do a review meeting, let's say 2 weeks down the line, which means 2 weeks are already wasted, chances. But if you can involve that person, instead of reviewing, if they can participate, then we don't need the review first of all. Yeah. We save a lot of time, right. and then we can take the decision right there in the room. So that's the kind of let's say process. If we can use in our team, that can really save a lot of time and. So, for example, a pod at 1mg, Yeah. which consists of different teams playing together. Correct. Right? So you're coming in from design, Vivek can come in from product, I Correct. can come in from engineering. Yes. How would you decide how many more stakeholders, decision making stakeholders would you need, or is this group enough? I think this group is, for example, at this moment enough, but every day towards the end, I would want someone from the tech or the person who can take the final call. If Vivek can take that final call, वो तो CEO हो गया. Done. No. वो तो CEO हो गया. CEO नहीं. See, of course, eventually, because he's presenting to the CEO someday. Yeah. And then that day he might take a call, right? Yeah. यार ये बात नहीं बन रही है. हाँ. आप वापस जाओ. फिर तो 5 दिन गए. ना इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10 मिनट इनफ है. आप ठीक है. पूरा टाइम मत मांगो, 10 मिनट मांगो, दैट इज इनफ. सो अगर आप 10 मिनट में अपना एक दिन का आउटपुट प्रेजेंट कर सकते हो टू टेक दैट इनपुट, दैट कैन सेव 2 weeks और इवन अ month's time. That is very important, I guess. Got it. So अभी अवनीश आपने 5-day प्रोसेस के बारे में बताया, तो एक बार कैन वी गेट इनटू द डेप्थ ऑफ कि क्या हर दिन करना चाहिए, बिकॉज फॉर मेनी ऑफ आवर लिसनर्स डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दिस. उनके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा कि कैसे हर दिन क्या क्या प्रोसेस हम फॉलो कर रहे होते हैं टू एक्चुअली रीच द एंड स्टेट. यार पहला दिन 5 दिन में जो है आपका आइडिया से लेकर टेस्टिंग तक इन्वॉल्व है पूरा, राइट. तो पहला दिन तो ऑफ कोर्स अगेन इट कम्स टू दैट फर्स्ट डायमंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, बट एट द सेम टाइम आप एक विजन भी सेट करते हो कि दैट्स व्हाई द डिसीजन मेकिंग और द कोर स्टेक होल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु कैन टेल यू दैट दिस इज वेयर आई वांट टू गो. ओके, ये मेरा विजन है. If you don't have a vision, तो as a team we don't know where to go. So that vision has to be very important. Now we have to really understand that उस vision में user कहाँ पे बैठ रहा है, right? So vision हो गया आपका stakeholder का कि ये मेरा path है, and then we understand इस path में user को क्या value मिलेगा. That's when you involve users. Subject experts. Why? Because let's say you are designing something for healthcare. Of course we are healthcare company, so वहाँ पे एक subject matter expert, let's say doctors, they are very very important, so they become subject matter expert. Similarly, if you can involve in day one some users, you can bring in to the room and discuss with them, because the first and foremost thing which is very very important is to just get rid of all the assumptions. चाहे वो कितना भी ज़्यादा एविडेंट, बहुत ही ज़्यादा कि यार ये तो सबको पता ही है, बट वो सबको पता ही है में लोग गड़बड़ कर देते हैं, समझे. एंड वो assumptions की वजह से ही सब लोग ये सारे कंपटीशन वही चीज़ बना रहे होते हैं जो हम भी बनाएंगे. बट देन हाउ डू यू डिफरेंशिएट? इफ यू गेट रिड ऑफ दोज assumptions and move a step ahead of them, that's where the game is. Got it. कि सबने assume कर लिया, हमने assume नहीं किया, हमने और टिक किया कि भाई इसके पीछे का रीजन क्या है. So critical reasoning is definitely critical. Right. Yes. Yeah. It's very critical. Yeah, but then again, like you said, design thinking could be a part of your life in any format. Correct. So let's move it to a context where what are companies, product companies doing today, or what are some of the highlights that you can sort of give us कि यार यहाँ डिज़ाइन थिंकिंग बहुत ही अच्छा यूज़ हुआ है एंड एक्चुअली हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले. LG का तो जैसे हमने एक रेफ्रिजरेटर वाला देखा है, बट व्हाट एल्स डू यू हैव? तो यार एक तो क्लासिक स्टडी सभी लोग जानते हैं यार, मतलब
अब उसका नाम लेंगे तो लोग यार इतना मंडेन सा है, राइट? एप्पल, राइट? So I'll not talk about Apple today. Let's not talk about Apple because Apple is something which is again misused and abused word. Every case study, Apple will be there. So वो सबको पता है, right? Let's not talk about it. Let's talk about Dyson. Dyson, right? Vacuum cleaners. Vacuum cleaners. Now this is the guy who is, of course, not just vacuum cleaners anymore. हाँ, ये आदमी इंजीनियर है, right? अब उसने he is the real design thinker, I would say. उसने इंजीनियरिंग और डिजाइन का इतना अच्छा मैनेज किया है ना, I think अनबिलीवेबल है आपका, और टेक्नोलॉजी को सामने लेके आया, विजिबल लेके आया। उसका मैं एक दूसरा एग्जांपल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देता हूँ, जैसे कि व्हेन वी वर डिजाइनिंग एयर प्योरीफायर्स ना, एयर प्योरीफायर्स ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हवा का थ्रो का इम्पोर्टेंस नहीं है टेक्निकली, आवाज का भी जरूरत नहीं है, ठीक है? वो साइलेंट सा प्रोडक्ट के कोने में बैठा होता है, चुपचाप अपनी एयर क्लीन कर रहा होता है ना। हमारे इंडियन जनता कैसी है, अब आप एक, और मैं इसको वो नहीं बोल रहा हूँ, ये अच्छा बुरा नहीं है, दैट्स हाउ वी आर इंक्लूडिंग मी, कि एक प्रोडक्ट रखा है तो मुझे आई शुड सी इट इज वर्किंग, राइट? हाउ डू आई सी? तो मुझे ये तो कुछ हवा वाला प्रोडक्ट है तो हवा फील होनी चाहिए, कुछ तो आवाज आए। सो दैट्स व्हेन सेम थिंग इन एयर कंडीशन, दोस्तों एयर कंडीशनर भी एयर थ्रो की जरूरत नहीं पड़ती टेक्निकली। अब बिना एयर थ्रो के आप एयर कंडीशन कर सकते हो, ठंडा भी कर सकते हो। सर नाउ इंडिया में देखा होगा आपका, अभी जो एयर कंडीशनर दिखते हैं, आधे लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ थ्रो बहुत अच्छा है, राइट? तो मानसून और ये क्या थंडर और दुनिया अलग अलग वर्ड्स यूज किए लोगों ने कि थ्रो बहुत अच्छा है, बट यू डोंट नीड थ्रो। इंडिया में एसी और पंखा साथ यूज होता है, ओनली कंट्री, राइट? राइट, क्योंकि वो स्किन पे हवा तो फील नहीं होगी तब तक लगता है चल रहा है। हाँ, these are the things wherein you really understand the behaviors. तो वो बिहेवियर अगर आप सोचोगे तो, अगर एज्यूम कर लिया होता कि यार एसी ठंडा करता है, यूएस में चलता है, यूरोप में चलता है, यहाँ भी एसी चलना चाहिए, बट नहीं चल रहा ना, तो यहाँ पे थ्रो चाहिए, हवा लगनी। तो आप देखोगे एसी का वेंट जो है मुंह बड़ा किया गया है। वी मेड वन एयर कंडीशनर जिसका ना वो जो एयर वेंट होता है उसका मुंह ना जानबूझ के बड़ा किया गया है। वो जब आप देखते हो तो फर्स्ट थिंग व्हिच यू सी इज अ वेरी बिग माउथ throwing a lot of air on you. That's when you believe, oh, this will really work. Now coming back to the Dyson, right? टेक्नोलॉजी को सामने लेके आए इतना, और प्लस द वे द टेक्नोलॉजी इज वर्किंग, आई मीन द एंटायर वैक्यूम क्लीनिंग मैकेनिज्म, वो उसको ट्रांसपेरेंट करके ब्यूटिफाई करके, अब अंदर की जो उसकी टेक्निकलिटीज उसकी बात तो नहीं करेंगे बिकॉज ही हैज एक्सेल्ड इन दैट। ही मेड अराउंड मोर देन 2000 प्रोटोटाइप्स टू टेस्ट, अभी भी किसी म्यूजियम में आई गेस रखे हैं वो। सो that's the beauty of it, and now it is also aspirational product. You walk into a Dyson showroom, तो सिर्फ वो product नहीं है, they have used design thinking in the entire organization. The way they sell, the way their salesman talks to you, the way they give demonstration, the way the product is packed, the way the visual design is, the way the product is designed, and the way technology has been brought out of the product and shown to the world. तो अब देख रहे हो आप एक बार उनका डायसन के शोरूम में जाओ, उसका जो बहुत महंगा तो ऑफ कोर्स है भाई, अच्छी चीज मिलेगी, पैसे भी लगेंगे यार, सस्ता में नहीं मिलता, एप्पल भी महंगा ही है नहीं जाता। बट जो उसका डेमो देखा है, जब डायसन वाला डेमो देता है, अब यू स्टार्ट बिलीविंग इन द टेक्नोलॉजी। वो तो वो फैंसी बात नहीं कर रहा होता है, टेक्नोलॉजी कोर टेक्नोलॉजी की बात करता है, जो उस प्रोडक्ट का कोर फंक्शन है उसी की बात करेगा बस, एंड दैट्स हाउ दे हैव मेड द प्रोडक्ट डिजायरेबल, फंक्शनल एंड वायबल अगेन, and expensive. हाँ, but I think that's fair because you can't have all the three things together at less cost, right? So I'm going a bit one step back. So you said about bringing on your users and all. तो when I think of users, तो बहुत तरह के users exist कर सकते हैं, और मैं सबको लेके आ नहीं सकता। तो how do I pick and choose कि ये user सही है, ये user नहीं लेके आना चाहिए? There can be n number of personas that exist in the market. अब मैं सारों को उठा के लेके आऊँगा तो possible होगा नहीं। So what you're saying is वो जो फूफा जी होते हैं उनको नहीं लाते क्योंकि उनके लिए सारी मिठाई खराब। सही बात है ना? इस सवाल में एक और सवाल छुपा है फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कि मेरा यूजर है कौन। ओके, क्या हर एक यूजर, हर एक आदमी इसके पास स्मार्टफोन है, क्या वो मेरा यूजर है? अगर हम ये पहले क्रैक कर ले, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चल मान लेते हैं, चलो एक मेरा एक सर्टेन तरीके का यूजर है। नाउ हाउ डू यू फिगर आउट कि कौन सी यूजर को बुलाना है रूम के अंदर? वो यूजर को बुलाना है सिलेक्टेड फ्यू जो आपके
बड़े यूजर बेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल एक यंग क्राउड 30 से 35 साल का, वो एक बहुत बड़े क्राउड को कवर कर लेगा, राइट. मेट्रो वाला अलग और सेकंड बीच सिटी वाला अलग, दो यूजर ये हो गए. देयर इज अनदर जनरेशन जो अभी टेक्नोलॉजी में ट्रांजिशन कर रहे हैं. जैसे मेरे डैड के एज के, वो उन्होंने बहुत मुश्किल से व्हाट्सएप सीखा है, बहुत मुश्किल से फेसबुक सीखा है. नाउ इज इतने सक्षम है कि शायद वो टाटा 1mg से कुछ कर सके, बट उतने सक्षम नहीं है, डर अभी भी है. तो वो यूजर चाहिए अगर मुझे उनको केपेबल करना है. अगर एज अ कंपनी मैं ये मानता हूँ कि नहीं वो नहीं चलाएंगे, उनका बेटा करेगा, देन दैट यूजर इज आउट. शायद नहीं चाहिए. बट वो हैं जो इसमें ट्रांजिशन करें, शायद तुम्हारे डैड की एज के शायद नहीं, बिकॉज यू यंगर है, तो वो शायद 55-60 की एज में होंगे फॉर एग्जाम्पल. उन्होंने तो वो थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे टेक्नोलॉजी में, तो वो यूजर चाहिए, उनके पेन्स क्या है. तो दैट्स हाउ यू डिसाइड कि कौन से किस तरह के यूजर चाहिए होंगे. कुछ स्पेसिफिक काउंट है क्या? 8 लोग बुला लिए, 10 लोग बुला लिए? क्वालिटेटिव में यार सी टेक्निकली इफ यू टॉक अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च, यार नंबर तो फिक्स नहीं है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट आपको सारे तरह के यूजर के रिप्रेजेंटेशन मिल गया है कि नहीं मिल गया है. एक से मिलता है तो एक से काम चल जाएगा. आप एक्सट्रीम होना बहुत जरूरी है. अगर एक्सट्रीम नहीं लोगे तो एक्सट्रीम सिनेरियो में नहीं आएंगे. बिकॉज आई थिंक इफ यू ऑल रिमेंबर, हम सारे पीएम डिजाइनर बात कर रहे थे, मेरा एक्सट्रीम यूज केस कैसे आएगा. एक्सट्रीम यूज केस मैं रूम में बैठ के नहीं बना सकता. करेक्ट. एक्सट्रीम यूजर के लिए मुझे एक्सट्रीम यूजर चाहिए, वही बताएगा एक्सट्रीम केस क्या है. राइट. बट अदरवाइज अगेन दैट्स एन असम्पशन. इसमें भी एक प्रॉब्लम है ना. हाँ. पीएम तो कहता है कल कर दो डिलीवरी. कहाँ से करे डिलीवरी भाई देखो, क्योंकि उसकी वो जो हमने 3 जो गोले बनाए थे, वायबिलिटी वो सब चीजें, तो एक बिजनेस का रिक्वायरमेंट ये है कि कल चाहिए. ना हाउ डू यू डू दैट? बट देन आई एम अज्यूमिंग दैट द 5-day साइकिल वुड स्टिल बी इनफ. ठीक रहेगा ना विवेक? नहीं, बट आई थिंक उसके लिए सबसे जरूरी चीज है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम कर सकें एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ कंज्यूमर इनसाइट्स, अगर आप वो चैनल बिल्ड कर सकते हो, तो आपको थोड़ा बहुत एक रेडीनेस रहेगी कि यार मेरे को कल कुछ देना भी है, तो मेरे पास एक ऐसा फ्लूक नहीं रहेगा या कंप्लीटली एक बिल्कुल असम्पशन नहीं रहेगा. आपको कुछ भी थोड़ा सा इंटेलिजेंस रहेगा. फॉर एग्जांपल हमने जो रिसेंटली कोशिश किया है कि हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, राइट, जैसे फ्लेबोटमिस्ट हमारे यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉल सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मासिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मेरे साथ वो लोग हैं जिनके पास इतना इंसाइट है, अगर मैं सिर्फ उसे वो यूज कर लूँ ना, तो मेरे असम्पशन काफी कम हो सकते हैं. राइट. फ्लेबोटमिस्ट जो डे इन डे आउट कस्टमर से बात करता है, वो ऐसी ऐसी चीजें ऑब्जर्व करता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते. राइट. सो ऑल द थॉट्स आर कमिंग इनटू with us. Similarly, pharmacist जो आपका prescription डिस्चार्ज करता है या बात करता है, वो भी बहुत सारे insights हैं. Got it. तो this is enough collection of insights which can come on regular basis. तो वहाँ पे आपको जो 1 day 2 day डिलीवरी है, वहाँ पे आपको थोड़ा इंटेलिजेंस ऑलरेडी रहेगा. अब इसके मेरे को प्रोज एंड कॉन्स दिख रहे हैं. तो प्रो ये है कि आपने आउटसोर्स कर दिया अपना यूजर इनसाइट का चैनल, तो आपको हर जगह से चीजें आती रहेंगी, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल फ्रंट लाइन पे. अब कौन ये है कि वहाँ पे चाइनीज विस्पर भी हो सकता है कि उसको ये लगा तो मैंने कुछ एंड में कुछ और ना बना दिया. करेक्ट. तो हाउ डू वी ड्रॉ दैट लाइन देयर? पहले तो आपने बोला आउटसोर्स, तो मैं ये मानता हूँ कि आउटसोर्स नहीं है, क्योंकि मेरे इंटरनल एम्प्लॉइज हैं. राइट. क्योंकि जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली वो भी वही अचीव करना चाह रहा हूँ, बट नॉट प्रॉब्ली विद दैट लेंस कि मैं शायद उसको अलग तरीके से देख रहा होता, वो कुछ और देख रहे हैं. इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. अगर आप वो वाली चीज, तभी तो लोग एप्पल की बात क्यों करते हैं, बाबर एप्पल क्यों आता है, या और कुछ ऑर्गेनाइजेशन पेप्सी को क्यों आता है, बिकॉज वो एक डिजाइन या प्रोडक्ट मैनेजर या एक टेक का काम नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम है. इफ यू कैन बिल्ड दैट कल्चर, अगर आपका फ्लेबोटमिस्ट अगर डिजाइन थिंकिंग कर सकता है ना, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी. सो वी नीड टू ट्रेन दिस पीपल टू रियली एम्पथाइज and start observing things which they are just ignoring or just overlooking. Because observation is a very important skill. Right. जो अगर आप कर सकते हो तो आप बहुत कुछ क्रैक कर सकते हो. So I agree. Got it. So ये है थोड़ा बहुत आउटसोर्स नहीं है. Right. बट ये बात भी सही की तुमने कि आउटसोर्स लग रहा है, because आपको लगता है उतने अभी उतना ट्रेन नहीं है. एक ट्रेनिंग लगती है यार बस. नो, बट आई थिंक आपने जो बात कही कि the entire organization is responsible for it. Right. And I think that's a fundamental idea that everyone needs to have कि
everyone is here only to serve the user. We are playing different roles Correct. to enable it. Correct. But goal तो same ही. Right. अगर वो गोल अगर मैं इधर गोल मार रहा हूँ, आप उधर गोल मार रहे हो, तो गोल तो लग नहीं रहा है. हाँ, सही बात. तो फिर आप वो हमने पहले दिन की जो बात की थी, Only passes. पहले फिगर आउट कर लेते थे कि गोल किधर है. अब फिर आप 100%. सारी वर्क फोर्स को उसी गोल में लगाओ ना यार. So this is convergence. फुटबॉल टीम की तरह खेलते हैं ना यार. बीच में भले ही बॉल यहाँ आ जाएगी, वो इवेंचुअली गोल पोस्ट से मारना है. Right. So Right. that's the idea. Got it. So, Avnish, now we'll jump to the most interesting section of our podcast, the rapid fire. Yeah, so Okay. we know that you love Dyson, right? I love Dyson. तो मतलब पैसे तो बहुत है. So what's your favorite trading platform? I don't have any. I don't have any Dyson. How do you manage your investments? What is your favorite trading platform? Who do you feel has solved this entire problems, this space very well? I recently spoke to my brother. He told me that he should invest in some, shares and basically I'm a person who will spend all my money to just experience things, but I don't save at all. So, But did you do it yet? no, not yet. So I'm thinking of doing it. So episode 2 we'll have to come back. Yes. Then I'll be, of course, exploring few tools and then maybe. Yeah. So full design research on all the trading platforms. 100%. Got it. Very nice. Yeah. Got it. So let's move on to the automotive section then. Yeah. You love cars. I love cars. So which one is the brand that you think has solved the design in the best way for the automotive process? यार अभी देखो वापस से इस सवाल को थोड़ा सा तोड़ना बोलना पड़ेगा. Now you said which is the brand who solved the design, right? Yeah. But of course अलग अलग तरह के लोग हैं. Right. अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से लोगों ने सॉल्व किया है. Right. अगर आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, like really ड्राइविंग एक्सपीरियंस, Right. then भाई एक ही ब्रांड है. से लग्जरी में जहाँ जिनके नाम हम सोच पाते हैं, that's BMW, right? If you have driven it, you will understand what I'm trying to say. बट आपको पीछे बैठना है, तो आप फिर मर्सिडीज में बैठ जाओ, ऑडी में बैठ जाओ, राइट. बट अगर आप थोड़े से मिड सेगमेंट में आ जाओ, लाइक जो मैं अभी चला रहा हूँ, सो I was looking for this car. I waited for a few months. It's Slavia, right? It's a driving car. Yeah. मतलब मजा आता है. Avnish basically rolls out in a black every single day. So, like the most badass designer that exists. बट रिक्वायरमेंट वही है ना कि किसी का रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को वैल्यू फॉर मनी चाहिए. राइट. थोड़ा सा एसयूविश फीलिंग चाहिए. सभी इंडिया में जो एसयूविश फीलिंग है वो नॉट एसयूवीज, राइट, टेक्निकली. बट क्योंकि जनता की रिक्वायरमेंट है, लोगों ने बोला अपने को चाहिए, तो बन रहा है. इसलिए वो सारे जितने भी है, लेट्स नॉट कॉल नेम्स, तो बहुत सारे कार्स ऐसी हैं, राइट, जो एसयूविश फीलिंग देती हैं, बट दे नॉट एसयूवीज. But people like it. So you understand what they want and you give that. But then now let's do rapid fire. Rapid, Yeah. Right? Exactly. Rapid, exactly. One line. 1mg rapid. 1mg rapid. Plug in. Yeah. So yeah, best social media according to you. Instagram. Best digital news platform. News platform. Yeah. I think I'll use in shorts. Photography and videography. Sony, because it's too simple to use. Yeah, I think, yeah. Sony. Online booking experience, travel and accommodation. Booking.com, I use that. E-commerce. Shopify has cracked it. Oh, interesting. Okay. He went on to e-commerce builders, not e-commerce providers. Because there are people who use even Shopify in a bad way. Right. Right. So Shopify has cracked it, yeah. The last one, watches. Technically I don't use watches, Okay. but I would, this answer will not be a rapid answer. Why, I'll tell you, because people made smartphones. They give all the functionalities in smartphones which can, and while people when many people bought smartphones, people stopped using watches. Right. But then it came back to picture, right? Correct. Smartphone चाहिए, smartwatch चाहिए, because now it's taking your let's say it has become more of a healthcare product than a timekeeping device. Right. So I would not say it's a smartwatch. It has become like a healthcare device now. So if you talk about healthcare from that perspective, it looks like a watch. But I think Apple Watch is the watch you're talking about. Got it. Interesting. So coming to an end, we'll just talk about like one parting advice that you want to give out to the product managers, engineers and designers out there to develop that thought process around design thinking, and what are some resources or what are some things that they can read about to actually
या मेरा एक ही सजेशन है कि जो हमारा वर्क फ्लो होता है ना वो लीनियर नहीं होना चाहिए. सो आई बिलीव दैट नो जब कोई भी प्रॉब्लम हम सोचते हैं ना सॉल्व करने के लिए, so if you can involve all these people who are thinkers, right, which you believe everybody is a thinker, so you have a design guy, you have a PM, you have a tech guy, you have a business guy, whatever, आप शुरू में ही शुरू करो उसको, instead of doing a linear thing कि आप पहले प्रोजेक्ट सोचा, केस स्टडी सोचा, एंड में आया, जब वो बाद में डिज़ाइन को जाता है या टेक को जाता है. सो उसमें आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, बिकॉज टेक वाला भी सोचता है राइट, एंड में वो क्वेश्चन करता है यार ये क्यों किया, बीच में डिज़ाइन वाला आ रहा है वो भी सोच रहा है कि ऐसा क्यों किया. सो एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग योर आइडिया, अब प्रोडक्ट मैनेजर्स आइडिया, सब क्वेश्चन कर रहे हैं, वो थोड़ा सा फ्रिक्शन आ रहा है. उनको शुरू में ले आओ, उनको को ओनर बना लो. पहले तो वो आइडियाज भी देंगे, को ओनर भी होंगे, फ्रिक्शन खत्म, टाइम बचेगा, एंड द सोल्यूशन इज समथिंग विच इज एवरीबडी इज काइंड ऑफ अग्रीइंग टू. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई बिलीव, आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट ये मेरा सोचना है. दूसरा ये कि आई थिंक instead of talking about design thinking, let's believe in design thinking. Let's implement it. Right. And yeah, Got that's it. the idea. Interesting. All right, so that's it we have from this episode of the Building Blocks. I hope आप लोगों को पसंद आया होगा the discussion that we had, and make sure you like, share and subscribe to our channel so that our reach keeps on increasing and we keep on bringing more insights for everyone who is watching these episodes. On that note, this is the Team Building Blocks signing off. Bye.